Well, let's get you started with some breaking news coming in this minute. Well, in news just in, Haryana minister says farmers committing suicides are criminals. A minister in Haryana on Tuesday courted controversy after he said that farmers committing suicide were criminals under the law. Agriculture minister here, the man in question, O.P. Dhankar, told media that state government could not support farmers who were committing suicide. He said that farmers who were committing suicide were running away from their responsibilities and leaving their families and children with liabilities. Dhankar, who earlier headed the Bharatiya Janata Party Kisan Cell, used to condemn the earlier UPA regime for not doing much for farmers, which was leading to increasing suicides in the state. Well, my colleague Arvind Chabra joining us now for further details. It's a shocking callousness, Arvind, the way Mr. Dhankar, the Haryana minister there, has gone about saying that those farmers who commit suicide in desperate conditions are indeed committing criminal acts. Well, yes, technically he may be correct, but this will be seen as a very callous and a very unsympathetic statement coming from a minister who is actually expected to come and support, to be compassionate towards the farmers who are killing themselves because of damage to their crops, because no help is coming from the state as well. At this point of time, the agriculture minister saying this is, of course, not going to be taken well at all. Already we've seen several suicides in the state. There has been massive damage to the crops, and a lot of farmers, a lot of the heads of the families, they have killed themselves after being receiving this kind of treatment from the government. They will surely be only further discouraged. Absolutely. The heads of the families, they have killed themselves after being receiving this kind of treatment from the government. They will surely be only further discouraged. Absolutely, and the hypocrisy of the minister is also quite evident in this case, because he's one, the agriculture minister. Secondly, he belongs to the BJP government. He's always headed the farmers' cell there in the state. And now that the BJP is in power, because earlier they used to condemn the UPA for not doing enough for the farmers, now BJP is making such hypocritical comments when the power is in their hands, when they could do a lot for farmers if they intend to. Well, that's right. See, when he basically said this, he was apparently referring to the Indian Penal Code, which makes it a criminal act under the Indian Penal Code to commit or attempt suicide. But the agriculture minister is supposed to be more compassionate towards the farmers. He should be helpful. He should be trying to dissuade themselves from committing suicide, but also at the same time he should be seen as in support of them, so that they do not resort to this act. Obviously, the opposition is going to take this thing very seriously, and they're going to just rip apart the BJP, which in any case is in the line of fire from the opposition for doing very little for the farmers, particularly the procurement as well as the compensation part. Well, it clearly seems the minister is desperate, and the comment comes out of desperation, considering that there are increasing number of suicides in the state. Rather than helping the farmers out, he's making such insensitive comments. I'm joined by Congress spokesperson Shobha Oza on the phone line at this point. Ms. Oza, what would be your thoughts to such callous comments? So this is very insensitive of the minister to say so. He is not the first minister to say so. Even Madhya Pradesh Minister, Mr. Kailash Vijayvargiya, has uttered such words that farmers are committing suicide not just for their personal reasons and not because of the right of agriculture, what they have today. This is very unfortunate that these ministers are trying to shed their responsibilities by blaming the farmers rather than solving their problems. The government should be sensitive to the problems of the farmers, because their produce is lying in the mandis. The government is not procuring it. They are not getting the support system. They are not getting adequate compensation. And then this land acquisition bill, ordinance. Everything is disturbing the farmer, and the farmer is, the plight is so bad that the farmer is forced to commit suicide because there is no way out, no hope at all from this government. So just by saying this, the ministers cannot shed away from their responsibility. They have to be sensitive. They have to
look out for ways and means to help the farmers so that the farmers are not forced to commit suicide. This is shameful. Such statements are totally shameful. Absolutely. In fact, ma'am, you know, this is the same person who's today the Agriculture Minister of Haryana. He was earlier heading the Kisan cell of the Bharatiya Janata Party when UPA government was in power, and he's really been very vocal in criticizing the UPA government for not doing enough for the farmers. In fact, some have also in the Haryana government gone ahead and said that it is the burden of the UPA government that has percolated in the NDA regime as well. See, the UPA and the UPA government, whenever there was such situation, the government took action in the sense, if you let me remind you that 72,000 crore was waived away, the farmer's loan was waived away when the farmer faced a similar situation in the past. But what is this government doing? The government has promised so much. But you can see that everywhere in the mandis, the produce is lying open. All right. Ma'am, if you could just hold your thoughts. I'm also joined by Kisan leader Rakesh Tiket at this point in time on the phone line. राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. आप क्या सोचते हैं, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद ही कह रहे हैं कि अगर किसान आत्महत्या करता है तो बहुत बड़ा क्राइम है. उन्होंने जो कहा होगा, क्राइम तो ये है कि आत्महत्या करना एक कानूनी रूप से जुर्म है, लेकिन आत्महत्या क्यों हो रही है? जी बिल्कुल. हमने सरकारों को ये कहा है कि इस पर कमेटी बननी चाहिए. आत्महत्या क्यों हो रही, इसको कैसे रोका जाए, किसानों का कर्जा क्यों है, इसको खत्म करा जाए और आगे कर्जा ना हो, इसकी व्यवस्था बने. और जब तक इन चीजों पर कमेटियां नहीं बनेगी, कानून नहीं बनेगा, तो देश में आत्महत्या नहीं रुकेगी. क्योंकि जिस तरह के हालात अब पैदा हो गए हैं, किसान पूर्ण रूप से हताश हो गया है, वो टूट चुका है, उसकी फसलों के रेट नहीं मिलते और वो आत्महत्या की तरफ जा रहा है किसान आज. बिल्कुल. और जो टूट चुका है किसान, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है, जो एक डेस्परेट कंडीशन में है, उससे संवेदनाएं दिखाने की बजाय इस तरह के एक तरह से ताना मारना, लॉ का हवाला देना कि क्रिमिनल है सुसाइड करना. अगर लॉ की बात कर ही रहे हैं तो ये सरकार में है, लॉ क्यों नहीं बनाते किसानों का ख्याल रखने के लिए? क्या आप चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहिए अब सरकार को, क्या ज्यादा जरूरी है इस समय? देखो, एक तो देश में है क्या कि कृषि मंत्रालय है ही नहीं जी. एक सबसे बड़ा सवाल है कि देश को आज 67 साल आजाद हुए हो गए, देश में कृषि मंत्रालय नहीं है और धनखड़ जी कृषि मंत्री है ही नहीं. भाई फूड उसके उसमें नहीं आता तो कहा कि कृषि मंत्री है. हमने ये कहा है कि एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन देश में हो, हर स्टेट में हो, और कृषि विभाग के 18 मंत्री होते हैं. जब तक वे सारे एक जगह नहीं बैठकर पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक देश के किसानों का भला नहीं हो सकता. और इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए धनखड़ जी को, क्योंकि वो भी किसान आंदोलन से निकले हुए हैं. बिल्कुल, यही तो आयरनी है ना, यही तो अजीब बात है कि वो बीजेपी के किसान सेल को हेड कर चुके हैं, उसके एकदम कोर ऑफ दी थिंग्स में थे, और अब कांग्रेस सरकार की इन्होंने पहले बहुत बुराई की है, यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया ऐसा बोला है. अब खुद सरकार में आए हैं तो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि खुद तो कुछ करेंगे, और करने की बजाय इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. आप क्या बोलना चाहेंगे एग्रीकल्चर मंत्री को? देखो, उनको नहीं बोलना चाहिए, देश का किसान क्राइसिस में है. आज वे बनावे, कमेटी बनावे हरियाणा में कि क्यों सुसाइड हो रहे हैं और हम इसको रोकेंगे, किसान पे कर्जा क्यों है और आगे कर्जा ना हो इसकी व्यवस्था हम करेंगे. पूर्ण रूप से कर्जा माफ होना चाहिए, और जब तक डायरेक्ट सब्सिडी किसानों को नहीं मिलेगी, अब किसान की जान भाव से भी नहीं बचती. अब तो सब्सिडी मिलेगी तो जान बचेगी, नहीं तो ये आत्महत्या का ग्राफ और ज्यादा बढ़ेगा. और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट. आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं तो कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार को, जिस तरह आप कह रहे हैं कमेटी बने, ख्याल रखे, जो गैप्स हैं उनको भरा जाए, लेकिन इमीडिएटली एकदम से क्या करना चाहिए कि कम से कम किसान अपनी जान तो ना ले? कोई ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे मेजर्स ले गवर्नमेंट कि डैमेज कंट्रोल हो जाए? सरकारों को बताया हमने, तुरंत ये कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है किसानों का उसको माफ करे सरकारें, और जो केसीसी कार्ड है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है,
उसमें ये करें कि हमने 1 साल का हमने माफ कर दिया और आगे किसानों को पूरा जमा नहीं करना पड़ेगा, उसका सिर्फ इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। किसान 500% तक का इंटरेस्ट देता है। ये बहुत बड़ी बात है आपने जो कही है, 500% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको लगता है सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही? नहीं, अभी नहीं कर रही। अभी हमने सरकारों को कहा है, हमने कहा है कि आप इस पर कमेटी तुरंत बनाएं, इससे ग्राफ 70% जो सुसाइड ग्राफ है वो रुक जाएगा। क्योंकि जिस किसान को 1 लाख रुपया जमा करना है वो 1 लाख रुपया देगा, 1 दिन के लिए बैंक में जमा करेगा, उसके लिए उसको 10,000 रुपए देने पड़ते हैं रिश्वत। तो आप कैसे वैसे कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि इतना ज्यादा बोझ है, कर्जा है किसानों के सर पे। अब एनडीए गवर्नमेंट है, पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट ने तो माफ कर दिया था काफी हद तक कर्जा, तो ये बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? देखो, माफ से भी हल नहीं होगा। किसान जितना केसीसी बनता है ना हर साल, 25,000 रुपये करके हमने डिमांड करी कि आप सब्सिडी किसान को दो जी, उसकी मजदूरी के पैसे दो, फर्टिलाइजर सब्सिडी डायरेक्ट लो, क्योंकि भाव नहीं दे सकते। 1967 में गेहूं पहली बार देश में खरीदा गया तो वो 76 रुपये पर क्विंटल था, सोने का भाव 200 रुपया तोला था। अगर आप दोनों चीजों को कंपेयर करें तो 3 क्विंटल के आसपास 1 तोला सोना आता था। आज भी दे दे 1 तोला सोना हमें 3 क्विंटल गेहूं में, वो नहीं दे सकते, भाव नहीं मिल सकता। सरकार सब्सिडी दे सकती है, सरकार के एग्रीकल्चर उत्थान के लिए सरकारी धन को दे सकती है। जी, बहुत कुछ कर सकती है सरकार, पर सपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, राकेश जी, आपको क्या लगता है क्या गैप्स रह गए हैं? अब जब फिर से एक बार ऐसा माहौल आया है कि जब किसानों की मेहनत सारी खराब गई है, बारिश आ गई, उससे फसलें खराब हो गई, यही कारण है, मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सुसाइड्स हो रही है, हरियाणा में भी हो रही हैं, वहां पे भी एग्रीकल्चर बहुत आया है कि जब किसानों की मेहनत सारी खराब गई है, बारिश आ गई, उससे फसलें खराब हो गई, यही कारण है, मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सुसाइड्स हो रही है, हरियाणा में भी हो रही हैं, वहां पे भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कि इंस्टेंटली जब भी ऐसा क्राइसिस आता है तो किस तरह से सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखो, किसान तो कर्जे में जा रहा है, वो अपने कर्जे से काम चला रहा है। पहले उसका 1 लाख रुपए कर्जा था, उसमें फिर डेढ़ होगा, फिर उसका 2 लाख होगा, वो कर्जे से अपने खर्चे चलाता है। हमें गेहूं बेच के मार्केट से पूरी चीज बाजार रेट पर खरीदनी है और हमारे जो फसलों के रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट बड़ी है उस हिसाब से फसलों के रेट नहीं बढ़े जी, ये सबसे दिक्कत है। अच्छा। अगर किसी चीज के रेट नहीं बढ़ रहे तो सरकार उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जी, राकेश टिकैत जी, इसमें एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन जब तक नहीं होगा, जब तक उसकी पॉलिसी पूर्ण रूप से नहीं बनेगी, किसान आय इनकम की गारंटी नहीं होगी देश में। अभी तो देश में कृषि मंत्रालय नहीं है, भारत सरकार में कृषि मंत्रालय नहीं है, न कोई कृषि मंत्री है। जी राकेश जी, तो आपने बिल्कुल बहुत सारी बातें बताई हमें, किस तरह से किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ शेयर किया इतना कुछ। सो देयर यू हैव इट, अ किसान लीडर राकेश टिकैत टेलिंग अस दैट देयर आर genuine problems of the farmers which the government should really address at this time of crisis rather than making such insensitive comments. My colleague Arvind Chhabra still with us. Arvind, well, the BJP government there in Haryana will have to answer many questions. You know, the hypocrisy that has been exposed in these comments, wherein a minister, and ironically agriculture minister, who's headed the BJP Kisan cell, saying that if you're committing suicide, if the farmer is committing suicide, he's committing a crime. Of course, technically it is a crime going by the law. But what about the lawmaker and his thoughts, his empathy with the farmers? He's not addressing the core issue. Well, that's right. What is unfortunate is the comment comes on a day when the Haryana government, when the Haryana chief minister was assisted by 2 other cabinet ministers, they announced a compensatory package of 2,000 crores for the state farmers. And this comment has just been a big letdown for the entire state government. See, the Haryana minister, agriculture minister, has to decide whether he wants to be with the farmers, True. be compassionate towards the farmers, or does he want to teach them the Indian Penal Code, telling them that this is a crime,
He should be basically trying to say that, see, we are with you. You do not need to commit suicide. Absolutely. We are with you in this time of Right. misery, in this We'll keep crucial a time. close eye on the way things progress from here on. We'll want to demand some answers from the minister concerned here, Mr. Dhankar, the Agriculture Minister of Haryana, for making such sensitive comments. We'll keep a close eye on that story. Thank you very much, though.